10 minutes, I think. Please wind up in 5 minutes. That would be okay. जी जी जी। Sure. So Dr. ठीक है Ashutosh सर। will share with us the key takeaways of yesterday's session. So please begin, Dr. Ashutosh. We can start. ठीक है सर। तो कल की क्लास में हमने सर से सीखा कि प्रेजेंटेशन स्किल यानी प्रस्तुतिकरण कौशल कैसा होना चाहिए। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सर ने, चूंकि हिंदी भाषी हमारे साथियों को ध्यान में रखते हुए ये बोला था कि आप उनको, उनके जो की टर्म्स हैं, उनके जो मुख्य बिंदु हैं वो हिंदी में बताइए। तो मैं उसको संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। सर ने पीपीटी के संदर्भ में कुछ बातें बताई थी, जैसे कि पीपीटी के संदर्भ में क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात बताई थी कि 5x5 रूल, यानी हमें अधिकतम 5 पॉइंट अगर पीपीटी बना रहे हैं तो एक स्लाइड में रखना चाहिए, और एक पॉइंट में अधिकतम 5 शब्द। यानी उसमें दो नियम ध्यान रखना चाहिए, एक तो 5 पॉइंट से ज्यादा एक स्लाइड में ना हो, दूसरा एक पॉइंट में अधिकतम 5 शब्द हों। और ध्यान ये रखना चाहिए कि पीपीटी में कंटेंट ज्यादा ना हो, मतलब तथ्यात्मक ज्ञान ज्यादा ना हो, बल्कि चित्रों का, इमेजेस का अधिक प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में सर ने बताया था कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, तीन टर्म्स दिए थे कि तीन में सर्वप्रथम हम क्या बताने जा रहे हैं, यानी किस विषय पर बोलना है उसे स्पष्ट करना चाहिए, विषय बताना चाहिए। बॉडी में फिर उस विषय का विस्तार से उसके बारे में बताएं। फिर कंक्लूजन में पूरे वक्तव्य जो आपने बोला है उस वक्तव्य को सार रूप में प्रस्तुत कर दें। इसके अलावा इम्पोर्टेंट सीज के बारे में, सी से जो संबंधित सर ने कुछ चीजें बताई थी कि प्रेजेंटेशन स्किल में, प्रस्तुतिकरण कौशल में क्या चीजें होनी चाहिए। उसमें उन्होंने कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास, यानी जब भी हम बोलें किसी भी चीज पर अपना वक्तव्य दें तो आत्मविश्वास होना चाहिए। और आत्मविश्वास सर ने संकेत किया था तो हमारे विषय के ज्ञान से आता है, कि जितना हमारा उसमें अस्पष्ट ज्ञान होता है विषय पर। दूसरा उन्होंने सी बोला था, क्लैरिटी अर्थात स्पष्टता, बहुत ही स्पष्टता से अपनी बात रखनी चाहिए। तीसरा, कनेक्ट विथ ऑडियंस, हम श्रोताओं से कैसे जुड़ पाए, जो श्रोता समूह है उससे कैसे अपने आप को जोड़ें, ये तीसरी चीज ध्यान रखनी चाहिए। चौथी है करेक्टनेस, अर्थात शुद्धता और सत्यता, यानी जो चीज हम बोल रहे हैं उसकी, उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए। और पांचवा कोहेरेंस, जिसको संबद्धता या सामंजस्य हम कह सकते हैं, यानी अपनी वक्तव्य में एक का पीछे कोहेरेंस हो, उसमें लयबद्धता हो, संबद्धता हो, ऐसा ना हो कि एक बार दूसरी जगह जा रही है, दूसरी तीसरी जगह। इन 5 सी की बात सर ने की थी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सर के कल के लेक्चर से आए थे, वो है आइडिया एंड एक्सप्रेशन अर्थात विचार एवं अभिव्यक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण सर ने बोला था कि आइडिया और एक्सप्रेशन जो है, जो विचार हमारा है और उसको किस तरीके से हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, यह प्रेजेंटेशन स्किल में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिस विषय पर बोल रहे हो, सर ने कहा था वी मस्ट स्टिक टू द कोर पॉइंट, यानी हमें उसके मुख्य बिंदु पर टिके रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसी भी चीज को प्रेजेंट करते समय हम उसके इर्द गिर्द ज्यादा चले जाते हैं। सर का कहना है कि जिस भी बिंदु पर प्रस्तुतिकरण हो उसके ही मुख्य बिंदु पर हमें टिके रहना चाहिए। इसके अलावा बोला था कि लेस इज मोर, यानी कम ही अधिक है, ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं। सर ने उदाहरण भी दिया था कि विद्यार्थियों को हमें उनके अंदर ज्योति जलानी है, यह न कि उनको उनके अंदर तथ्यों का बहुत ज्यादा उन्हें तथ्य बता दें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात थी कि क्वालिटेटिव लैंग्वेज, यानी अपना वक्तव्य रखते हुए हमें गुणवत्तापूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिस जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो, प्रवाहपूर्ण हो, और शब्दकोश अधिक होने चाहिए हमारे, मतलब शब्द अधिक होने चाहिए हमारे पास उस भाषा के। तो इतनी महत्वपूर्ण चीजें सर मुझे समझ में आई जो कल आपने अपने वक्तव्य में बताई थी। थैंक यू सर। Dr. Ashutosh, you have done a very good job and you have covered almost all the points. Just one point I was remembering, we talked about why do we make presentations, and there we discussed this idea that we make presentation to inform and also to inspire, isn't it? जी So the idea was that जो आपने दूसरी तरह से कही वो बात कही कि ज्योति जलाना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सिर्फ प्याले को भर देना जो है, दैट्स नॉट टीचिंग. So filling the pail versus lighting the candle, that is, I think, is something which we discussed. And a good presentation is always a combination of these two objectives. Naturally, when we have specific information,
we can invoke that information for inspiring others, isn't it? So, but information alone cannot be the purpose of, because right now students have far better ways to gather information. What they are looking for is something different. Okay. So that different is, inspiring them, creating an interest, creating a genuine understanding of the issues that we are talking about. So Ashutosh, I compliment you for a good job done. थैंक यू सर। एंड आई होप जो हमारा हिंदी भाषी समूह है उस वो इससे लाभान्वित हुआ होगा, और I will also keep trying to, communicate my ideas bilingually, but there is a tightrope walking which I am doing, isn't it? So I'm trying to balance so many other things also. So I hope you will understand my own constraints under which I'm operating. So, but nevertheless, we should maximize learning for everyone, and we should be fair to everyone also. So now let us start with the session yesterday. The session that we had discussed yesterday. Yes, one thing which I talked about in the language, we missed out, Ashutosh, that point. That was mother tongue influence in our language, isn't it? So many a times we speak English, but our diction depends on the part of the country we come from, and it is generally it influences our diction of English language also. So this is something which we need to try to evolve a more cosmopolitan kind of diction which could be understood by everyone, not just our part of the country. India has a lot of diversities. In fact, these are like 29, 30 nation states who have their own language base, who have their own cultural practices. So it becomes very difficult to, evolve an accent or a diction which is understood by everyone. But nevertheless, we should keep trying. Just be conscious. In fact, yes, I think before we start the session, let me comment on one more thing. And Ashutosh ji, you can write it in the chat box. There are 4 language skills. What are these? One is reading, then listening. Actually, most of the time we begin by listening. How do we learn a language? How do we pick up a language? Like, for example, mother tongue. We listen to it, isn't it? And when we listen to it, we gradually pick it up, isn't it? We start speaking also. So the other language skill is speaking and then writing. So I'm writing these 4 language skills: reading, listening, speaking, and writing. Some, yes, Richa has written it, LSRW. So actually, how do we pick up a language? We listen, but then when we read, then our quality of language improves, and that gives us vocabulary, and then we start speaking also. But the finer command on the language comes when we start writing the language. In fact, there is a saying by Francis Bacon which goes like this, that reading makes a knowledgeable man, conference, like the discussion that we are having, conference a ready man, but writing an exact man. So only when we write the language, we know the exact words that we should use. So I wish, in fact, some of you are blessed with a good language base. For example, yesterday I was quite impressed by the language base of Dr. Sandeep, for example, who spoke first, or Dr. Afshan.
Even Ashutosh exhibited that very fine command over language. So I wish such kind of command rest of us also acquire as we grow in this profession. So now let us start with today's volunteers. I've got 13, 14 names of volunteers, and let me see how many of them we can accommodate. And when we are through with it, we will try to accommodate more. My wish would be that we give opportunity to as many as possible. Naturally, we cannot give this opportunity to everyone because of the large size of the group. So Shivam, Francis Bacon said, I have already communicated. Somebody from English literature may write the exact quote. The exact quote was, reading makes a knowledgeable man, conference a ready man, but writing an exact man. Isn't it? So often थोड़ा सा let us accept it कि language के front पे कुछ shallowness आई है हम लोगों के अंदर. There is a bit of a shallowness. And that is because now we are not writing as much as we used to write earlier. Earlier, at least we used to write letters to our dear ones. Isn't it? Now we only write WhatsApp messages. Isn't it? Usme bhi we often prefer sending voice messages because writing demands some kind of attention, patience. So because of that, our mental training to use the language effectively is getting compromised. So let us, I'm very happy that we have some at least in the group who have demonstrated a very high level of language proficiency. And I have already pointed out, and I'm looking forward to more such candidates today. Yes, Ashutosh has written, reading makes a full man, conference a ready man, and writing an exact man. So now Nisi Karunia, are you there? Yes, sir, I'm here, You are sir. there. Then Yes, Dr. sir. Nahar Singh from the Alba Institute. Yes, sir, I am Dr. here. Nahar Singh, have you joined? Yes, sir. You are there? Okay. Yes, sir. And Devender Pal Singh from Banaras. Yes, sir. Good morning, You sir. are there? Good morning. And then King Shuk Panda from West Bengal. Yes, sir. Yes, You are there. yes, sir. So these are the four persons whom we would listen to in this round. And somebody may please volunteer to be the timekeeper of the session, preferably from amongst those who have already presented yesterday. Will somebody volunteer to be the timekeeper? Okay. Hmm. Okay, sir. I'll do. Okay, Dr. Afsha will do the honor. So, Dr. Afsha, please be the time. And the time is today, because now they are prepared, we will give them 3 minutes. है ना? So, Okay, after 2 minutes, 30 seconds, sir. you will indicate that now it's their time to wind up. Ji, sir. Okay. So, Nisi Karunia, please start your presentation. She is Yes, from sir. English language and she will talk about idioms in English. Yeah. So, good morning, everyone. This is Missy from Lady Dog College, Madurai. And today I'm going to talk about idioms in English language. So, to talk about idioms, they are a very interesting aspect in English language and literature. So, why do we use idiom? What's the idea behind using idioms? So, let's see what an idiom actually is. So, when you look at an idiom, it actually means something different instead of the literal meaning. For example, once in a blue moon is an idiom. The meaning of the idiom is it occurs very rarely. But so, in order to understand idioms, you need to know that they mean something entirely different from what the actual term means. And if you want your language to be more expressive, so yesterday, sir actually said that language should play in your tongue. So if you want your language to be more embellished, to be more expressive, you can make use of idioms. And in order to convey subtle meanings or intentions, poets and artists, they make use of idioms in their works.
So now let's look at a few idioms. So I'm going to teach you a couple of idioms that you can make use of when you speak or when you teach your students. So the first idiom is fit as a fiddle. Okay, fit as a fiddle means being in good health. Okay, so my grandmother is 89, but she is fit as a fiddle. So you can say my grandmother is 89, but she is healthy would be a normal way of conveying. But if you say my grandmother is 89, but she is fit as a fiddle, it adds a lot of standard and a lot of value to the way you speak. Okay, so let's look at what a fiddle is. A fiddle is something that looks like a violin, but it's not a violin. Okay, so the picture you see here is that of a fiddle. So fit as a fiddle is an idiom that means someone is healthy and fit. So the next time you describe someone who is very healthy, you can say that they are fit as a fiddle. Let's look at the next similar idiom, which is in fine fettle. So if somebody asks you how you are, okay, how are you? So I'd say I'm in fine fettle. Instead of saying I'm fine, I'm okay, I'm healthy, this is a better way of expressing yourself. I'm in fine fettle. She's in fine fettle. After the paid holiday break, all the employees return to work in fine fettle. Probably after our faculty induction program, all of us are going to return back to our usual work in fine fettle. Okay, so in order to say, okay, fine is a normal expression, in fine fettle would be a better way of expressing. Please conclude. Yeah, so the last idiom I'm going to talk about is a piece of cake. Something easily accomplished is called a piece of cake. Okay, so this is actually used in the Royal Air Force in the 1930s to describe a mission that was very easy to accomplish. Okay, so we've looked into 3 idioms today. One is as fit as a fiddle, the next one is in fine fettle, and a piece of cake. Learning English is a piece of cake if you read every day. Okay, thank you so much. Thank you, Nisi. Now, Dr. Nahar Singh, please. Thank you, sir. आवाज आ रही है, sir? Yes. I am Dr. Nahar Singh from the Alwag University, Agra. सर मेरा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन. शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है? सबसे पहले हम बात करेंगे फिलोसफी. फिलोसफी का मतलब होता है द लव ऑफ विजडम, ज्ञान से प्रेम करना. और एजुकेशन का मतलब होता है रीड आउट, मतलब जो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना. बच्चे के अंदर सारी शक्तियां. शिक्षा का मतलब होता है उन शक्तियों का विकास करना. अब हम बात करते हैं कि फिलोसफी डिपेंड ऑन एजुकेशन. फिलोसफी दर्शन है वो शिक्षा पर निर्भर करता है. बिना शिक्षा के दर्शन आगे बढ़ ही नहीं सकता है. शिक्षा को एक आधार के तौर पर देखते हैं. एजुकेशन इज द बेस. शिक्षा एक आधार के तौर पर देखते हैं और शिक्षा प्रसार करने का भी साधन है. दर्शन का प्रसार किस तरह से किया जा रहा है वो शिक्षा के माध्यम से पॉसिबल है. और एक तरह से प्रदाता के तौर पर काम करता है, एक तरह से टेस्टर के तौर पर काम करता है, एक परीक्षक के तौर पर काम करता है. शिक्षा दर्शन का परीक्षक के तौर पर काम कर रहा होता है. और एक दिस इज द जस्ट लाइक ए प्रोड्यूसर. शिक्षा एक निर्माता के तौर पर है. जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता चला जाएगा वैसे वैसे दर्शन का भी विकास होता चला जाएगा और जो भी दर्शन आए वो शिक्षा के माध्यम से पॉसिबल हो पाएगा. एजुकेशन इज द डायनामिक साइड. शिक्षा क्या है? एक तरह से गतिशील पहलू है. लगातार गतिशीलता होती रहती है. जैसे पहले आइडियलिज्म आया, फिर नेचुरलिज्म आया, फिर प्रैग्मेटिज्म आया, फिर रियलिज्म आया और आजकल ह्यूमनिज्म की बात की जा रही है. तो जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता चला जा रहा है वैसे वैसे दर्शनों का विकास होता चला जा रहा है. सो वी कैन से दैट द फिलॉसफी डिपेंड ऑन एजुकेशन. दूसरी साइड में हम बात करते हैं कि एजुकेशन डिपेंड ऑन फिलॉसफी. शिक्षा दर्शन पर आधारित है. किसी भी आधार पर दर्शन शिक्षा को एक आधार देने का काम कर रहा होता है. हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे, हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे, ये हमें दर्शन बताता है. जिस तरह से आइडियलिज्म कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य किस तरह से होने चाहिए, हम किस आधार को रख करके शिक्षा देनी चाहिए, वो हमें आइडियलिज्म बताता है. नेचुरलिज्म कहता है कि बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा दीजिए. आइडियलिज्म कहता है, आदर्शवाद कहता है कि बच्चे को चरित्र निर्माण की बात करें, मॉडल एजुकेशन की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात कर रहे होते हैं. लेकिन नेचुरलिज्म कहता है कि बच्चे को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जानी चाहिए. प्रैग्मेटिज्म कहता है, प्रयोजनवाद कहता है कि शिक्षा ऐसी देनी चाहिए समाज की भलाई होनी चाहिए. Your time is over, so wind up. Yes, Next. sir. तो मैं
मतलब ये है कि एजुकेशन डिपेंड ऑन फिलॉसफी एंड फिलॉसफी डिपेंड ऑन एजुकेशन. इट मींस दिस आर द इंटरडिपेंडेबल. एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित तौर पर कह सकते हैं. बिना शिक्षा के दर्शन नहीं चल सकता है और बिना दर्शन के शिक्षा नहीं चल सकती. थैंक यू सर. Thank you, Dr. Nahar. Devendra Pal Singh. Good morning, sir. Good morning, Devendra ji. मेरा टॉपिक सर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कशन के लिए क्यों रेशनल है इन प्रेजेंट सिनेरियो. शायद इस सब से हम लोग बड़ी भांति परिचित हैं, क्योंकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन को लेकर के एक बहुत जोर दिया गया है और गवर्नमेंट लेवल पर हमारे पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्जन का एक प्रयास चल रहा है. धीरे धीरे 2040 तक उसका लक्ष्य रखा गया है. तो वो जो हमारी एक एजुकेशन में एक रिफॉर्म आ रहा है उसके लिए जिस टर्म का यूज हो रहा है उस टर्म को जानना बहुत जरूरी है. अब मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन को पहले समझना होगा और उस डिसिप्लिन से हम मल्टी डिसिप्लिनरी और फिर उससे रिलेटेड और क्या कॉन्सेप्ट हैं उसको पहले जानना बहुत जरूरी है. अगर हम बात करें इससे रिलेटेड एक सीरीज की या कॉन्सेप्ट्स के, तो एक डिसिप्लिन वर्ड है, एक डिसिप्लिनरी वर्ड है, फिर एक मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ड है, फिर एक इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड है और एक फिर ट्रांस डिसिप्लिनरी वर्ड है. यानी डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी, फिर मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी. ये पूरी सीरीज को हम अगर समझने की कोशिश करें तो इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. हम सब पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, वहां पर हम सब ने जो फूडी सेक्शन होता है वहां पर सलाद सैलेड्स को देखा होगा, उसका सेक्शन देखते हैं. जब प्लेट उठाते हैं तो सबसे पहले हम लोग वहीं पहुंचते हैं. तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे अलग अलग पात्र में वेजिटेबल्स या अनकुक्ड वेजिटेबल्स रखी होती हैं. खीरा रखा है, ककड़ी रखा है, प्याज है, टमाटर है, वगैरह वगैरह. ये सीन हम बहुत फेमिलियर हैं इन सब चीजों से. तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं. इस पूरे सीन को लेकर के हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या होती है? एक बाउंडेड एकेडमिक फील्ड ऑफ नॉलेज होती है. यानी एक बाउंडेड नॉलेज की जो ब्रांच है या एक बाउंडेड नॉलेज ब्रांच को हम डिसिप्लिन कहते हैं. जैसे मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, ये क्या है? एक डिसिप्लिन है. अब उसी डिसिप्लिन से एक डिसिप्लिन वर्ड आता है, यानी प्रैक्टिसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिसिप्लिन. किसी एक डिसिप्लिन की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो उसके डिसिप्लिन कहलाती है, डिसिप्लिनरी होती है या वो डिसिप्लिन कहलाती है. अब वो जो सलाद रखे हैं अलग अलग, वो सलाद क्या है? वो है एक डिसिप्लिनरी एजुकेशन. यानी सब चीजें अलग अलग हैं, ककड़ी अलग है, खीरा अलग है, सब चीजें अलग. फिर 3 मिनट से ज्यादा हो प्लीज वाइंड अप. और फिर उन्हीं सभी सलाद को हम या जो वेजिटेबल्स हैं उनको अलग अलग ना रख करके एक अगर हम पात्र में रख देते हैं तो वो होलिस्टिक हो जाता है. और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो इसी सलाद को अलग अलग पात्रों में ना रख करके एक पात्र में रखना है, ताकि एज अ गेस्टाल्ट चीजें आए, यार अर्थात सारी चीजें हमारे अंदर जाए लेकिन सब संतुलन में जाए. थैंक यू सर. Thank you. Kingshuk Panda. Good morning, sir. Good I am morning. Kingshuk Panda, Assistant Professor, Political Science from Jhargram, West Bengal. I am presenting on the idea of socialist and secular mentioned in preamble of Indian Constitution. The preambles declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. But nowadays we find that in 21st century the policies and plans of governments is far away from this idea of secular and socialist. So if we discuss the secular and socialist, it is very important. It is very important to discuss. So socialist
means in Western tradition, socialist means there will be uh, ownership of all means of production and distributions by the state. But in Indian context, socialist means the reducing the inequalities between rich and poor. And on the other hand, secularism means in Western traditions, separation of religion and politics. That is, political institution will not interfere in religious institution, religious matter. On the other hand, religious institution will not interfere in political matter. But in Indian context, secularism means equal respects and equal protection of all religions by government. That is, government institutions will protect and equally respect and protect all the uh, uh, religious institutions. But in reality, we found that in India, there are various political parties which is based on religious, particular religious motive. And in reality, we find that there is communal riots based on religious matter. And on the other hand, we find that 40, we know that total uh, Indian property of 42% Indian property belongs to 3% of Indian community, Sir, Indian please people. conclude. There is an inequality between inequalities between Indian people. So now time has come to uh, for reformulate the plans and policies of government where the exact idea of secularism and exact idea of socialist should be reflected in Indian plans and policies of government. Thank you, sir. Thank you, Kingshuk ji. So we have listened to four of our friends in this round, and let me now comment on their performance, and then we will get into the second round. So starting with Nisi, I think Nisi, I compliment you for your good command over language. सर एक प्रश्न है मेरा Well, जो विभिन्न लोगों का प्रेजेंटेशन देखते हुए मुझे भी चीज समझ में आई और ये प्रश्न सर आपके कमेंट से पहले अगर हो जाता तो शायद हम लोग के लिए बेहतर होता, इसलिए मैं आपको रोकने चाहता हूँ। सर ये था कि जो इंटरनेट पे या मोबाइल पे जो हम लोग का प्रेजेंटेशन है, मुझे जो समस्या होती है या मैं अन्य लोगों की भी देख रहा हूँ कि वो भावनात्मक रूप से जो हम लोग क्लास में विद्यार्थियों से जो जुड़ते हैं वो इंटरनेट पे या ये मोबाइल पे या ये कहा जाए कि ऑनलाइन में उस तरीके की भावनात्मक चीजें नहीं आ पाती हैं। इसको कैसे ठीक किया जाए सर, थोड़ा सा इस पे भी हम लोग का प्रकाश अगर डाल देंगे तो हम लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा। My request to all those who have some queries which arise, naturally they will arise. So my request to you, and including all others, would be, please write your query on the chat box. That will be more efficient. सर एक बार थोड़ा चेहरा आप पीछे कर लें तो आपको पूरा चेहरा दिखाई देगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा सर। थैंक यू सर। So my request to all the participants would be that if they have a query, it is always better to, it will be better, it will be far more efficient to write it on the chat box, and that way we will also know exactly what is our query, because as we have already discussed that writing makes an exact man. So this is my request. I will this is a very valid query and I will comment on it in the course of my discussion now. Nisi, as I was complimenting you that you have a very good command over language, and you seem to be very well conversant with English language, and that's your plus. And but just one comment which I wish to make, that when we have for example, you discuss three mediums. If you have had an occasion to read them also, you just spoke them. So sometimes,
we need to engage multiple senses of our audience. So we are speaking at the same time. If we are showing something, it reaches out better. But you are very lucid and you have good command over language, and I compliment you for a good presentation. And one more thing which you demonstrated, that you selected a theme and content to suit the time limit that has been earmarked. So yesterday we discussed this point, less is more, and Ashutosh repeated that today. So don't try to do, a good speaker makes a good judgment about the theme. He doesn't try to do too much or too little. So on that account, was also your presentation was a very balanced one. So overall, it was a good presentation. Now, Dr. Nahar, my comment on your performance is that overall your language base, and in fact you have a good bilingual language base. You can, जब आप अंग्रेजी बोल रहे थे या आप हिंदी बोल रहे थे, दोनों में आप का लग रहा था कि you are comfortable in both the languages. So this is a positive thing in you. And in what I complimented Nisi on, you also selected a theme in which you could do justice in the limited time which was given to you. अब जहां आपको improve करना है डॉक्टर नाहर, just reflect on it. एक तो I have already shared this idea that ultimately, और ये बात अभी हमारे एक साथी ने पूछी भी, how do we connect with the audience? And this challenge becomes even more difficult when we are interacting in the online mode, isn't it? And there's a kind of faceless kind of a situation in which there is no human connect which we have in the class generally, isn't it? But even then, there are some aspects, for example, eye contact. Eyes are one of our most expressive organ. In fact, somebody is I read a couplet on this, कि आंखें ज़बां नहीं है मगर बेज़बां नहीं. So our eyes speak, the way we connect with the audience. Now, online mode में कैसे होगा? For example, what was happening with you, Dr. Nahar? You were referring to the text which you have prepared, which is fairly okay. But if we refer to our written text too often, then we tend not to maintain eye connect with our groups. So my request to you would be, try to be less dependent on the written text. You may have points, but it should not appear as if you are reading or referring to it more often than required. And that will improve your connect with the audience. And my second suggestion to you would be, yesterday we discussed, I think, one more C which was not mentioned by Ashutosh. Now I remember it again, which is charged presentation, the energy level that you put in your presentation. Okay. So my request to you would be, your energy level may be slightly higher, isn't it? So that will engage the audience even better. So 2 comments. 1, be less dependent on the written text. And second, try to put in more energy in your presentation. In fact, when we are on the podium or when we are in the class, it should appear as if it's an occasion for us. And I've got an opportunity to make an impact on the audience. So if we go with that mindset, it makes a difference to the audience also. Okay. So, but overall, you impressed me with your performance, and just take care of these 2 aspects. Now, Devinder Pal Singh ji, who talked about multidisciplinary education, I think in your case, your content was well thought out. Your example was perfect for explaining it. The only issue that you faced was of time management, isn't it? Perhaps इसमें हम एक सी इस्तेमाल और करते हैं कि प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग, लेकिन एवरीथिंग इज ओके इन बैलेंस ओनली.
In your case, you build the context so much that by the time you came to example, your time was already over. So, uh, 3 minutes for a 3 or a 5 minutes presentation, our prior preparation, maybe a few rehearsals, that always helps because it helps you clock your time better. So that was one of the core issue, but otherwise you have this ability to explain the ideas with the relevant real life examples, which is a very good ability for a good teacher. And you are contemporary also. Contemporary in the sense that a theme, you took up a theme which is topical, which is latest, which is in the news, and there is a move towards more, interdisciplinary education. So these were your pluses. Just focus on your specific preparation, especially time management, because that will help you deliver your presentation even better. Now, Kingshuk Panda, who talked Sir, about can I add one thing? yes, Afsha. Sir, it was multidisciplinary. It was, Yes. he said multidisciplinary, so I was little confused. Yes. In fact, he talked about various stages of how do we grow in the discipline, and he talked about transdisciplinary also. Maybe there was some issue with pronunciation. So, Devenderji, you can take it. Devenderji, in fact, my request to all of you would be when the feedback is being offered, at least we can have that courtesy of keeping our video on. Yes, sir. Now, Kingshuk Panda, you made a presentation on secular and socialist, and you explained that. I think in your case, two things you need to focus on, Kingshuk. One is, we were talking about language base overall, and language always helps. But what happens is when we are not very, very comfortable in the language and it is not very smooth, how do we tackle that situation? One of the way we do it, the way you did it, we have fillers, lot of fillers in the delivery. For example, we'll say, yes, secular means, then again we start. So you have to take care of these fillers. There are too many fillers in your delivery and they block the communication. They do not, yesterday we used an expression, a good presentation should flow like a river. So your presentation was moving in a halting manner, and there were a lot of fillers in between. Work on them. The second problem which I experienced was with respect to the diction. Yesterday I talked about mother tongue influence. In your case, the specific problem was, Kinshuk, where are you? Are you there in the Yes, group? sir. Yes, yes, sir. So why I'm not able Yes. to see you, please? Okay, sir. Yes, sir. So I was talking about the diction part, the mother tongue influence, the sa and the sha sounds, especially. Yeah? So please take care of it. Try to, Okay, sir. if you consult some of your language teachers, they will tell you about a thing called phonetics. किस लफ्ज का कहां से उच्चारण होना है, that has to be very carefully worked out. So that was something which I noted. And the third thing which I have commented on Dr. Nahar also, there should be more force in your delivery. You are presenting in a very simple manner, that's all okay, but it should appear as if it's an occasion for you. So it was not very forceful presentation. It should have that lage ke yes, a young man like you is speaking. So these are the three things you can work Thank on. you. And now let us get on with the
second round, and we will follow the same format. We will listen to some of you, and then we shall share your we shall share feedback on your performance. Ashutosh Kumar, are you there? Ashutosh ji? Yes, sir. Your, Yes, sir. your Yes, subject is geography. What is the theme on which you will be speaking? sir. System approach, sir. System approach in study, sir. In geographical study. Okay. Then Dr. Muhammad Faisal Rahman from Patna. Yes, sir. You're there? Okay. He will talk about Yes, sir. business environment. And then Shalini Shukla from Saharsa. Hello. Shalini Yes, sir. Shukla, you're there? Okay. And sir. then Vishal Dikshit, physical education. Vishal Dikshit ji, aap hain? Yes, sir. Okay. So we will listen to these 4 participants in this round. And then I'll give my feedback on the performance. Let us start. Ashutosh ji first. Yes, sir. And Thank you, Dr. sir. Akshan continues to be the timekeeper, please. Okay, sir. Thank you, sir. Good morning to all. I am Ashutosh Kumar from Ranchi University, Jharkhand. So I'm going to present on importance of system approach in geographical study. So first of all, here I would like to define system. Okay, because when we talk about system approach, tantra upagam, so we must have to know about this system, what system exactly is. So system is a set of components. Simply, we can define a system like a set of components in which each and every component are interlinked to each other in such a manner that if any one of them are get affected, it will automatically affect the other components and hence the system as a whole. मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि तंत्र उपागम में तंत्र को सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है। अगर हम कोई भी अध्ययन तंत्र उपागम के आधार पर करते हैं, सिस्टम अप्रोच के बेसिस पर अगर हम कोई भी स्टडी करते हैं, तो उसके लिए तंत्र को जानना जरूरी है। तंत्र होता क्या है? तो तंत्र एक घटकों का, अवयवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक घटक एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं कि अगर हम किसी भी रूप में अगर उनमें से कोई एक घटक प्रभावित होता है तो वह अन्य घटकों को प्रभावित करेगा और इस रूप से पूरा का पूरा तंत्र प्रभावित होगा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है फिर? मोस्ट इन नॉट ओनली इन ज्योग्राफी बट इन अदर disciplines as well, this approach is very effective and important for them actually. तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रिसर्च में वैसे ही हम पढ़ते हैं शोध में कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी समस्या का निराकरण। सो टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और जब हम सिस्टम अप्रोच से कुछ स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसमें बेहतरीन चीज यह होता है कि हम यह देखने की कोशिश करते हैं जो विभिन्न घटकों, डिफरेंट कंपोनेंट्स में कहाँ किस लिंकेजेस में फॉल्ट है, एंड वंस वी एबल टू आइडेंटिफाई दैट फॉल्ट इन द लिंकेजेस, so we will definitely able to solve the problem associated with that system. So please conclude. So, okay, ma'am. So, in this way, a system approach is very significant, is very useful in case of study in higher education, in researches. Okay, so like for an example, ecosystem. जब हम ecosystem की बात करते हैं, आज environmental problem एक बहुत बड़ा problem है हमारे सोसाइटी का, फॉर इंटरनेशनली इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो अगर हम इसका स्टडी करना चाहें जो कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को, उसके कंजर्वेशन के डायरेक्शन में हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए सिस्टम अप्रोच से स्टडी करना बेस्ट होगा। उससे क्या होगा, हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स है इन्वायरमेंट के, उनमें जो लिंकेजेस होनी चाहिए, उन लिंकेजेस में कहाँ फॉल्ट है, वो चाहे एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के वजह से हो, अदर जो आपका नेचुरल डिस्टर्बेंसेस। ओके, थैंक यू सर। मोहम्मद फैसल रहमान। यस सर।
Sir, I would like to share my screen. Please do that. Sir, is my screen visible? Yes, now it is visible. Good morning, everyone. My name is Mohammad Faisal Rahman, presently working as Assistant Professor in the PG Department of Management at Maulana Mazharul Haq Arabic and Persian University, Patna. Today, I'll be giving a small presentation on business environment scanning. This is the agenda of my presentation. First, we will get to know a brief introduction about environment. Then we will get to know what is environment scanning. And finally, what is the outcome or what do we get out of Faisal, your environment? slides are not moving, please. Sir, now my slide is visible? Yes, yes, yes. Okay, in full screen, sir, perhaps it is not visible. Yes. Sorry for the interruption. This is the agenda of my presentation. First, we will get to know a brief about environment, business environment. Then we will get to know what is environment scanning, and finally, what do we get out of business environment scanning. Like the general environment, business environment is also the same. It is the aggregate of all conditions and events that surround an organization and affect it directly or indirectly. Business environment can be categorized broadly in external and internal environments. External environment factors are mostly uncontrollable, like political, economic, social, technological, legal factors. And internal environment factors are by far controllable, like business own work culture, its HRD, its R&D facility, etc. So it can be understood that environment is dynamic, complex, and challenging, and hence uncertain. And this uncertainty creates the need to monitor the environment or to scan the environment so that there is no strategic surprise. I mean to say that the organization is not caught on the wrong foot or not caught off guard due to any ongoing change in the environment, and it ensures companies' long-term health. Environment scanning can be described as the process of monitoring, evaluation, and dissemination of information relative to the organization. It can be characterized by two terms, holistic exercise and continuous activity. By holistic exercise, we mean that looking at the forest and the trees, that it means that we have to look for factors both in external as well as internal environment. External environment scanning gives us the So opportunity please conclude. and threats, and internal environment factors give us the strength and weakness of the organization. It has to be a continuous activity so that the organization is in the know of what is going on in the environment. And it helps in establishing a strategic fit between the company and environment. So this slide summarizes what we have discussed today, the external factors, the internal factors. Through environmental scanning, we monitor all those factors, and relevant information is then fed to the top management of the organization so that a strategic plan or long-term plan is created for the organization. That's it Thank from you, my Faisal. side. Thank you. Thank you, Faisal. Now, Shalini Shukla from Hindi Literature. जी सर। सर आपको सादर प्रणाम, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र मिश्रा कॉलेज सहरसा बिहार में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। मेरा विषय है लोक साहित्य का स्वरूप और विशेषताएं, वैशिष्ट्य। लोक साहित्य दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और साहित्य। लोक का अर्थ है जन सामान्य वर्ग, लोगों का समूह, और साहित्य साहित्य उसी जन सामान्य वर्ग से संबंधित है जिसमें उनकी संपूर्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। उसी जन सामान्य वर्ग की संपूर्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। ये जो लोक साहित्य है, इसमें रीति रिवाज, परंपराएं और रहन सहन, इन सभी जो लोक में उन जन सामान्य के बीच में घटित हो रहा है, उसका चित्रण होता है। लोक साहित्य के रूप में हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि हमारे घरों में मातृभाषा में कहीं पे अवधी भाषा है, तो कहीं पे भोजपुरी भाषा है, कहीं पे ब्रज भाषा है।
सभी के घरों में वैवाहिक अवसरों पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं। ये लोकगीत लोक साहित्य के अंतर्गत ही आता है। इसी के अंतर्गत लोक नाट्य भी आता है। लोक साहित्य में कोई भी ऐसा लेखक नहीं होता है कि वो ज्ञात हो। लोक साहित्य रचने वाला अज्ञात होता है। उसका कोई निश्चित लेखक नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। इसका व्यक्तियों का समूह है पूरा, जो लोक साहित्य की रचना करता है। लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसका लेखक अज्ञात है और ये मौखिक परंपरा के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रहा है। मौखिक परंपरा अर्थात मुख से। हमारी दादी माँ ने कहा, हमारी नानी माँ ने कहानियां सुनाई, ये सभी लोक साहित्य के अंतर्गत ही आता है। इसे एक रचना के रूप में बांध दिया गया है, इसको लिखित रूप में प्रकट कर दिया गया है और लोक साहित्य इसका नाम रखा गया है। लेकिन लोक साहित्य का जो रचयिता है, जो लेखक है, वो अज्ञात है। वो एक जनसमूह है जिसने उसको रचित किया है, उसको बनाया है। इसमें कोई बनावटीपन, दिखावा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कृत्रिमता नहीं है, क्योंकि ये लोगों के जनसमूह उनकी भावनाओं से, उसमें उनकी भावनाएं समाहित है, उनकी भावनाओं को इसमें भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। जी मैम। लोक साहित्य का जो संसार है, जो इस संसार से संबंधित है, ये रचना, ये जो विषय है, ये पूरे लोक से संबंधित है, इहलौकिक और पारलौकिक। तो लोक का मतलब है संसार, यानी संसार में जितनी भी जातियां हैं, समुदाय हैं, उनकी भावनाओं को इसमें अभिव्यक्त किया जाता है, कहानी के रूप में, कविता के रूप में। और जो लोक साहित्य है, इसी से ही शिष्ट साहित्य बनता है। राम और कृष्ण से संबंधित जो रचनाएं हुई हैं, वो यहीं से उठाई गई हैं, जैसे रामचरितमानस हो गया, जो विश्व प्रसिद्ध साहित्य है। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर शालिनी। नाउ विशाल दीक्षित, डॉक्टर विशाल दीक्षित from physical education, and he'll talk about health and fitness. Hello. Yes, Dr. Vishal. Am I audible? You're audible, but you're not visible. Just a minute, sir. I would like to share my screen if you allow me. लेकिन आप पहले कैमरा को तो एडजस्ट कीजिए। Okay. Now it is visible. You are visible, but it is horizontal view only. You should be in the portrait form. Yes, yes. Now it is okay. Okay. Thank you, sir. Now may I share my screen? Yes, yes. You know that in just 10 minutes of stretching in a day, you can significantly boost your health and fitness. As American exercise physiologist Dr. Bob Anderson once said that stretching is the fountain of youth. Today, let's dive into the rejuvenating world of daily stretching and uncover the incredible benefits of it hold for your overall health and well-being. So, a very good morning to all of you. Myself is Prince Vishal Dikshit, and I'm Assistant Professor Physical Education in NMS Das College, Badaयूं. Vishal, there is a problem. We are not able to see you. I think you are displaying it in full screen mode, because of which we are not able to see you. So for us, it's more important that we see you, not just your PPT. Sir, how can I be? Just minimize your screen. I think. Actually, I'm using my Android phone. That is why I think it has some. Phone say you will not be able to do it. You have to use a laptop. So we will give you another chance. If you want to use PPT, it is always better if you use laptop. From Android phone, you will not be able to achieve both the objectives. And for us, it is more important that we should be able to see you, because then only we'll be able to comment
हमारे एक साथी ने ऑलरेडी इस पे बात की है। देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट क्रिएट ए कनेक्ट विद ऑडियंस, और जब वी आर नॉट एबल टू इवन सी द फेस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट। Okay. So you have an option either to use your laptop. We will give you another chance. We will come back to you later on. Sure, sir. I'll demand for some more minutes. So I'll Yes. arrange a laptop. Yes, yes. We will come back to you. You arrange a laptop and make a presentation using laptop in a manner so that we are able to see your PPT as also see you. Okay. We'll come back to Okay. you, Vishal. Okay. Thank you, sir. Dr. Sanjay Kumar, are you there? Sanjay Kumar from chemistry. You want to speak on catalysts? Yes, sir. Are you ready for your presentation? Yes, sir. Okay, please start. Can I share my screen? Yes, why not? Sir, maybe some difficulty in presenting screen. Oh, sir, I have some problem in presenting the PPT. So can I speak? मतलब ऐसे ही बोल दे? Yes, that would be better. Yes, yes, sir. That's the real test of a person's teaching, actually. Yes, sir. Yes, sir. When we make a free-flowing presentation. Yes, sir. Yes, sir. I am Sanjay Kumar, Assistant Professor at Nanlal Singh College, Daudpur. Today I am talking about catalyst. So catalyst is the substance which changes the rate of reaction by changing the path of reaction. मतलब ये है कि कोई भी कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन के पाथ को केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ रिएक्शन। यदि हम लोग कैटलिस्ट की टाइप की बात करते हैं तो ये 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, सेकेंड वन इज नेगेटिव कैटलिस्ट, थर्ड वन इज होमोजेनियस, heterogeneous and auto catalyst. If we talk about positive catalyst, means positive catalyst is the substance which increases the rate of reaction by decreasing the activation energy. मतलब यह है कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करके, तो इसे हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे। यदि हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उस दौरान वेनेडियम पेंटॉक्साइड हम लोग यूज करते हैं एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो नॉर्मल क्या है कि ये गैसियस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन नॉर्मली स्लो होते हैं, लेकिन वही हम लोग वेनेडियम पेंटॉक्साइड यदि यूज कर लेते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को काफी इनहांस करता है। सेकेंड वन एग्जांपल इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ C2H4 टू C2H6। सेम केस यहाँ पे भी है। यदि हम सेकेंड वन नेगेटिव कैटलिस्ट, तो नेगेटिव कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द बाय इंक्रीजिंग द activation energy. In that case, if we see the decomposition of H2O2, तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 जो डिकम्पोजिशन करके देता है वाटर और ऑक्सीजन, इस जगह पे हम लोग H3PO4 यूज करते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। उसी तरीके से यदि हम ओके मैम, थैंक यू मैम। उसी तरीके से यदि हम लोग Na2SO3 का ऑक्सीडेशन देखते हैं एयर से, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं।
Okay, sir. Thank you. Thank you, Dr. Sanjay. Yes, sir. Thank you. So we have listened to four speakers in this round. आप अपना स्क्रीन बंद कर दीजिए. आपका पीपीटी sir, अभी भी yes. खुला हुआ है. हाँ, ये कुछ प्रॉब्लम हो गया है सर. Okay. Before I comment on the specific speakers, there is a thing, there is a feeling which I'm getting from these four presentations whom I have listened to in this round. I wish to elaborate a concept which I call the concept of T of knowledge. What is this concept, T of knowledge? You know, we all have encountered this letter in English language, T. Now, T, if you look at T, it has two arms, the horizontal arm and then the vertical. And T has a, in fact, people in architecture, they use it very often, this concept. They call it the golden ratio. What is that golden ratio? The golden ratio is 1:1.6. So all things which are proportionate have this golden ratio. For example, if you look at a beautiful face, if you look at it closely, you will find that this ratio is there in that face also. In fact, the entire human body is also designed for that golden triangle. So if you stretch your hands, for example, and if you stand firm, you will have this golden ratio, 1:1.6. Now, how it is applicable to us when we are in the process of acquiring knowledge and sharing knowledge? When we make any presentation, it should have sufficient breadth, but it should also have sufficient depth. Because especially when we are interacting with a group like this, which is intellectually at a higher plane, we have to share something which is intellectually stimulating or something which actually excites the mind of the person. So if we look at presentations which were made, for example, starting with Ashutosh ji, you talked about systems, and then you elaborated the system. And then in the later part, when the presentation was coming to an end, you talked about the concept of ecosystem, and then you tried to elaborate the concept of system using this idea of ecosystem. So what I feel is, in fact, in this context, one more thing which I would like to share with you, and that is there are two logics that we employ for explaining an idea. I hope some of you have come across this idea of deductive versus inductive logic. Yes, sir. What is deductive logic and what is inductive logic? Sir, inductive logic means when we go from bottom to top, sir, means a specific to general, sir. Okay. Idea, the idea. Yes, you are very right, like Dr. from Ashutosh. In top fact, the to other bottom. expression that you use, from general to specific or specific to general. In deductive logic, we move from general to specific, and in the inductive logic, we move from specific to general. For example, let us take an example that will help us. For example, Dr. Devender was talking about multidisciplinary education, isn't it? And he took the example of a salad on display in a kind of a feast. He was talking about that. Now, he would have started his presentation with this example. So that would have been actually a case of inductive logic. By and large, all of us are attuned
or more, prone to use deductive logic, especially when we are in the lecturing mode. All lectures that we have listened to generally follow this pattern. The teacher will come. For example, our friend now, Sanjay Kumar, was talking about catalyst, and then he explained what is the concept of catalyst, and then he went ahead and gave some certain examples. Now, my question is, in fact, world over, there is a trend that inductive logic is far more engaging than deductive logic. Why? Because it creates a live context. For example, let us say Shalini ma'am was talking about Lok Sahitya and she explained. She could have started with a Lok Geet, which is popular in her area, and could have narrated it. In fact, could have even sang it. And when you sing the song, you create an engagement. तो अच्छा टीचर कौन होता है? अच्छा टीचर वो होता है जो एक शीरा लगाना जानता है जिससे मक्खी खुद आके चिपक जाए. What I'm noticing is that many of us are not, using inductive logic in our presentation, and because of this, our presentation is fine in terms of content. It is but it is too abstract. Generally, teacher के बारे में students कहते हैं बहुत theoretical बात करते हैं, बहुत abstract बात करते हैं. If we can develop this ability to link our core concepts with larger life realities and pick out examples which can, stick with the audience, that would be better. So, pardon please, sir. I have a query, sir. So, yes, Dr. May I, yes, sir. Sir, I have a query that, yeah, you rightly said that we should follow inductive approach, sir. But when means somewhere I studied that in elementary education, in school education system, inductive approach is much more effective. But when we talk about of higher education system, so their deductive approach is much more appropriate. So actually, this judgment we have to make in terms of the demands of the subject. For example, what I am doing presently, I could have delivered a presentation or lecture. In fact, I am going to do it, but in the last session, and that too at the fag end of the session. What I'm trying to do, I'm trying to build up my core concepts in the light of the presentations that have already been made. So yesterday, for example, I received this feedback that it was an engaging session. Now, how I was able to create that engagement? Because I was using the participants as live examples of presentation skills. So I could have done it. I could have, I have actually a PPT which has so many slides and all that, and it explains key elements of a good presentation. But does it create an engagement with the audience? But when I'm asking you to make a presentation, actually I'm engaging you, I'm involving you in the presentation, and see what kind of variety I'm getting. It would not have been possible if I would have used deductive logic. In fact, in some of the disciplines, it has become almost mandatory to use inductive logic. For example, in our own medical college, for example, each department, it starts with a seminar in the morning where the live cases that the interns have experienced in the college, medical college, they are discussed, and all the theories build around those examples. So my point is that inductive logic is far more engaging. ये जो case method of teaching हमारे ये फैसल जो हैं वो management के हैं, he would know that there is a method which we call the case method of teaching. All good business schools are now following case method of teaching. They will not teach the theory first. They will share a real life situation. And then they explain the concepts, whichever concept. For example, business environment. We can scan actually an environment and see, and then discuss how the theory of it operates. So try. My only submission is I am sharing with you a few options.
क्योंकि my larger point is I want that we should make presentations which actually create a connect with the group. और हमारे एक साथी ने अभी ये पूछा था सवाल कि देखिए ऑनलाइन क्लास में तो और मुश्किल हो जाता है कनेक्ट एस्टेब्लिश करना, फिजिकल क्लास में तो फिर भी आपको स्टूडेंट्स के हाव भाव से कुछ अंदाजा हो जाएगा, यहाँ तो 99% लोग स्क्रीन को ऑफ किए हुए हैं, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा कनेक्ट? कम से कम क्लास में तो आपको ये फायदा होता है कि यू कैन एक्चुअली लुक इनटू द आईज ऑफ द स्टूडेंट एंड सी कि वेदर ही इज विद यू और नॉट। आपने कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसकी समझ में आया कि नहीं आया, ब्लैंक फेस तो नहीं लिए हुए बैठा है। लेकिन यहाँ तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज द ऑप्शन टू क्रिएट एन एंगेजमेंट? द ओनली ऑप्शन दैट आई हैड फॉर क्रिएटिंग एंगेजमेंट वाज engaging with you, using you as live cases of presentation skills. So my request to you would be, when you make a presentation, try using inductive logic. Yes. I think it would create a better connect. तो ये मेरा एक लार्जर पॉइंट है। वन, जब आप कोई बात कहें तो ऐसी बात कहें कि जो, जिसे वो कहते हैं ना कि ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी बेहतर है, या कुछ ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। तो वो बात कीजिए कि जिससे आप कम से कम लोगों को इंगेज कर सकें, उनको लगे कि हाँ कोई थॉट प्रोवोकिंग बात हो रही। तो मुझे ये लगा कि जो भी इस बार प्रेजेंटेशंस हुए वो कंटेंट रिच थे। जैसे आशुतोष जी, आपने बहुत तैयारी करके आए और आपने सिस्टम के बारे में बताया, लेकिन अब आपके लिए नेक्स्ट चैलेंज ये है कि उस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को आप कैसे और लाइवली मैनर में डिस्कस कर सकते हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, एंड दैट वुड क्रिएट मोर एंगेजमेंट इन योर क्लास. The same goes true for Dr. Faisal Rahman, who talked about business environment scanning. Can you pick up a live case and then explain the concept of business and environmental scanning? I know it is very difficult to create that kind of engagement in a 3 minutes or a 5 minutes class, but try it in your larger classes first, and perhaps this would stick. And Dr. Faisal, otherwise you have a good base. Dr. Faisal, can you switch on your video, please? Sir, my video is on, sir. I'm listening, sir. But I'm not able to see you. Sir, I don't know why, but my video is on, sir. Achha. I'm able to see only Dr. Reena, then Pushpendra. Now I'm able to see Dr. Faisal also and Mahendra. Just 4 of you whose videos are switched on, and Me I'm able also, to see sir, them. Dr. Anupma. Me also, sir. Dr. Anupma, Sanjay Kumar. yes, now I'm able Sir, to my see. video is also on. So wow. The video is also on, sir. तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो नहीं होता था ऐसे। एक्चुअली ये एक और प्रॉब्लम है ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस में। द टेक्नोलॉजी इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड रादर देन गेटिंग सिंपल। सो जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर संजय prepared a good presentation and finally he was not able to show it because of technical glitches. तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी सिंप्लिसिटी की तरफ मूव करना चाहिए, बट लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव कर रही है। Sir, perhaps it is due to the large number of participants in the group. Perhaps it is due to that. No, I have had large जल्दी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। There is some issue because this is a problem which I am experiencing with this group specifically, and most of you are saying that you are your video is on, but I am not able to see you. Anyway, I'll discuss it with Mazhar, the technical person, and find out how can we sort it out. Anyway, so my is my core point with you. That is concept of theory of knowledge. So when you say something, select a theme in which there is sufficient breadth, but also enough depth. And then try using inductive logic instead of deductive logic.
So Dr. Faisal, this is something which for you, your presentation. In terms of explaining the idea, again there's some disturbance. So शालिनी मैम, आप एक आध अच्छा लोकगीत सुना देती तो और भी अच्छा होता. You have good command of a language and you explained the ideas very well. But by the time we came, अब जैसे for example, I'm not able to see Dr. Shalini. I don't know why. सर मेरा वीडियो ऑन है. And this is surprising. Now I'm able to see you when you spoke. Maybe it is like this when we switch on both the audio and the video, then we are visible. So maybe that's the reason. So Dr. Shalini, you have very good command of language. I compliment you for that. And just this idea which I have shared with you, try using inductive logic next time. And then सर मैं लोकगीत सुनाना चाहूंगी 2 लाइन. Yes. 2 पंक्तियां. सोने की चिड़िया होए देखवा हमार, सोने की चिड़िया होए देखवा हमार, टुकुर टुकुर ताक रहा सगरो संसार. ओहो टुकुर टुकुर ताक रहा सगरो संसार. तो G20 चल रहा है और उसी के उपलक्ष्य में मैंने ये लोग. You could have very well started with this, and it would have immediately stuck with the audience. जो मैंने कहा ना कि अच्छा टीचर कौन होता है, अच्छा प्रेजेंटेटर कौन होता है, जो शीरा लगाता है. जी जी. जिससे मक्खी खुद आके चिपक जाए उसमें. That's our role as a teacher, isn't it? So you have good language base and you have good understanding of your subject. Try this. I think. Then Sanjay Kumar ji, आपने catalyst. Yes, I'm feeling very sorry for you that you prepared a presentation but you were not able to. Yes, I think Vishal has rightly noted. Many of us have our electronic hands up. Why we are keeping it up? In fact, yes, this is my one comment to Shalini ji. We were not able to see your full face because your electronic hand was up. Why we are keeping our hands up? At least 20 of you have your range. I think this is the reason why we are not able to see many of you. Please put down your electronic hand. Because only those who have raised their hands, they are visible. Vijay Kumar, Durgesh, Jyoti, sab, please put down your electronic hand. Swati. Still, there are many who have their hands up. And I think this is the culprit. Because of that, we are not able to see those whose videos is on. बेटा हम कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, हमारे मन में ये लगा है ना, तुम्हें जो खेलना है खेल लो, कोई रोक टोक नहीं है. Dr. Jyoti, please put down your hand. Nirbhay, Vijay, Abhishek, Himanshu, Ashwani, Amit, Roshni, Anita, Saroj, Deepak Singh, Vijay Kumar, Himanshu, अभी भी बहुत लोगों का इलेक्ट्रॉनिक हैंड अप है. I don't know what is happening. Vijay Kumar ji, are you there? Hello, am I audible to all Yes. of you? Yes, Himanshu ji. Good morning, sir. Good morning. आपका वीडियो ऑन ही है अभी हिमांशु जी. सर एक मिनट से ट्राई कर रहे हैं, सर प्रॉब्लम जा रही है.
इसिल, विजय कुमार, अमित कुमार, अश्विनी, प्रदीप, जागृति, सरोज कुमार, अनीता वर्मा. The electronic hand is up. ये जो हमारे एक साथी पूछ रहे थे ना, आपने नाम में DSS क्लास रखा है. व्हाट इज योर नेम? सर मेरा नाम सुधांशु शेखर सिंह है. कल मेरा प्रेजेंटेशन था सर, वो चूंकि व्हाट्स योर गुड नेम? सुधांशु शेखर सिंह. हाँ, तो आप अपना नाम लिख लें तो अच्छा रहेगा कि कम से कम DSS क्लास से हमें क्या पता चलेगा. देखिए यही प्रॉब्लम जो आप ऑनलाइन मोड में जब हम बोलते हैं, अब जैसे मुझे पता, अब ये आई एम गेटिंग द फीलिंग दैट विजय कुमार जी जो हैं ये अपना स्विच ऑन करके ये कहीं चले गए हैं. ही इज नॉट पार्ट ऑफ द क्लास. तो अब उसमें आप कैसे क्रिएट करेंगे एंगेजमेंट इफ समबडी इज नॉट इवन देयर इन द क्लास? I can very well make out Amit Kumar, Vijay Kumar, Ashwini, Pradeep, and Saroj. They have just switched on. Sir, I am present in class. My hands is down, but still it's showing up. कौन? Sorry sir, मैं अश्विनी बोल रहा हूँ सर. नहीं, वो बोल रहे हैं. सर मैं क्लास में हूँ लेकिन मेरे हैंड्स भी डाउन है, लेकिन आप कह रहे हैं अब है शो हो रहा है. अश्विनी कुमार हो सकता है, दो अश्विनी हो, ये भी तो हो सकता है. दो 200 पार्टिसिपेंट्स हैं. ओके सर. तो देखिए थोड़ी कोशिश आप कीजिए, थोड़ी मैं करूं, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक एटिकेट्स हैं फॉर कंडक्टिंग द ऑनलाइन क्लास, इफ वी फॉलो वी विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट. वरना फॉर मी आल्सो दिस वुड बिकम मोर लाइक मोशन व्हिच आई एम परफॉर्मिंग, एंड so I really wish we create an engagement. So yes, I think Vishal has correctly noted. Ashwini ji, if you have logged in from two devices, then also this might be a problem. Please check. But my personal hunch is that there are two Ashwinis, and one is very much here, the other one has left for good. Okay, now can we listen to, if I think Sanjay ji? Yes, I was commenting on Sanjay. Yes, sir. Yes, sir. Sanjay, I am feeling very sorry that you could not run the PPT which you have prepared, and that would at least help us appreciate the contents better. लेकिन मुझे लगता ये है कि थोड़ा सा आप इस बारे में गौर करें जो मैंने इंडक्टिव लॉजिक की बात कही. Can you have some examples which are drawn from your local context? जैसे लास्ट में आपने अल्कोहल की बात की, in some reactions you can use alcohol as a catalyst. तो कुछ ऐसी जैसे SO2 आप कहेंगे मैं SO2 बनाने में हम, अब SO2 is too technical a thing for majority of the class. So a good teacher is one who picks out examples from his or her local context. Examples with which we are able to relate. देखिए मैं एक और I think rather than starting another round, I will share with you 3 levels of understanding a phenomenon. We call it information, knowledge, and wisdom. These are the 3 levels at which we live our subject. For example, देखिए अभी मैंने presentation सुना, जैसे ये शालिनी मैम, she was talking about लोक साहित्य, या इससे पहले हम लोगों ने कुछ लोगों को बहुत कॉम्प्लीमेंट भी किया, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर अफशान yesterday was talking about flipped classroom, और निसी करोनिया she talked about idioms in English. तो जब भी कोई स्पीकर बोलता है मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि ये किस लेवल पे उस सब्जेक्ट को जी रहा है. क्या ये एक सिंपली इंफॉर्मेशन लेवल है, या नॉलेज लेवल है, या विजडम का लेवल? What is information level? देखिए किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए we need to understand
the basic terms of that subject. Yeah, for example, when we were learning mathematics, what was the approach? We were asked to memorize tables, we were asked to memorize formula. लेकिन ये एक बहुत कोर बेसिक लेवल होता है of acquiring understanding of a subject, information level. When we truly understand the subject and we see this information in a pattern, we develop our knowledge. तो एक लेवल होता है knowledge का, second level. But the ultimate understanding of a subject comes when we are able to graduate from knowledge to wisdom level. Wisdom level पे क्या हो रहा है? हम we don't only understand the subject, we integrate it with the real world. For example, if you are talking about catalyst, how can I use this understanding of catalyst to practical real life, solving practical real life problems? तो अगर हम अपने आप को उस लेवल पे ले जाएंगे, यानी नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज बट एट द विजडम लेवल, उस वक्त हमारे एग्जाम्पल्स भी फिर वो होंगे जो रियल लाइफ से रिलेटेड हो. अदरवाइज वी विल बी डिस्कसिंग वेरी बुकिश काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स. तो आवर एबिलिटी टू पिक आउट, देखिए हर वक्त अपने सब्जेक्ट की आंखों से दुनिया को देखिए. मैं अपनी दुनिया को समझ रहा हूं मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से, ऐसे ही हमारा जो एक समाज शास्त्र का आदमी है या पॉलिटिकल साइंस का आदमी है, वो उस चश्मे से दुनिया को देख रहा है. और जिस दिन आपको दुनिया उस चश्मे से समझ में आ गई, आपने विजडम को एक्वायर कर. So my request to all of you would be, I was talking about content rich. Actually, content rich is not in terms of knowledge or information. It is in terms of wisdom. जब हम विजडम के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है. विजडम के लेवल पे अगर हम रह के फिर प्रेजेंटेशन देंगे, उसकी बात बिल्कुल अलग है. I hope I am able to reach out to you on this account. We still have 2 more minutes. If you have एक शेर आपको सुना दे रहे हैं इस पे. देखिए विजडम का लेवल क्या हो रहा है. There is a couplet which says कि जो है मालूम वो भी ना मालूम, जो है मालूम वो भी ना मालूम, ये भी एक उम्र में हुआ मालूम. We only discover our ignorance when we reach to the wisdom. So that's my wish to all of you. Can we graduate to that level? So that's all I think. Yes. Sir, this is Faisal. Yes, Faisal. Sir, apart from the inductive logic that you asked me to incorporate in future, sir, I would like to know any specifics related to it, because during my observation there were some interruptions, so that's why I'm requesting you again. Your presentation was good because perhaps you were the only one who consciously used that structure, the idea which I have discussed earlier, isn't it? Your presentation had a proper structure. You had the agenda, then you developed the ideas, and finally there was a concluding slide. So in terms of your thought process, you are on the right track. But now what you need to do is develop an understanding of your larger context. So that will come about when you observe things outside your classes in the real world, and that will enrich your understanding of the concepts. So that when I use inductive logic, what I was actually saying is, जैसे for example, आप business environment की बात करते हैं, there is an issue of north-south, let us say, domination. जो north है हमारा developed north, अगर जैसे किताब है आप पढ़ें, Confessions of an Economic Hitman, तो उसमें आपको लगेगा कि डेवलप्ड वर्ल्ड अपना पूरा एजेंडा कैसे पुश करता है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड. तो जब आप उस अंडरस्टैंडिंग के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट को देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ आने लगेंगी. सो एनलार्ज योर नॉलेज बेस,
जो मैंने टी की बात कही, चीजों को फैलाव में भी देखें लेकिन चीजों को गहराई में भी देखें। तो जब वो डेवलप होगा तो यू विल ग्रो इनटू ए वेरी गुड टीचर। यू हैव द बेसिक बेस, you have good language skills, you have a structured logical mind, but now deepen your understanding. हम लोग की सबकी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि मुझको गहराई में उतरना है और मैं गहराई सतह पर चाहूं। हम लोग बहुत शैलो वाटर्स में तैरते हैं, है ना। तो जैसे कहते हैं कि साहिल पे तो हर सू तुझे पत्थर ही मिलेंगे। गौहर की तमन्ना है तो दरिया में उतर जा, गहराई में उतरना पड़ेगा, then only will be able to actually discover a pulse of wisdom. तो सिर्फ किनारे किनारे न चलिए, take a deep dive. That's my request. Thank you. So let us have a short break of 30 minutes. I am sorry if I have hurt a little bit. Thank you so much. क्योंकि मुझे लगा कहीं के Thank you, sir. Thank you so much. कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sir, sir. what Thank you, about sir. the rest of presentation? Thank you, Yes, we sir. will Thanks, sir. Thank you, sir. presentation in the next session. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. When we meet, sir? Thank you, 7 sir. a.m. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. दोबारा क्लास कितने बजे होगी? दूसरी क्लास कितने बजे होगी? 11 बजे क्लास 11 बजे क्लास होगी। कितने दिन में? और जब काम हो जाए के बाद दिखाना नहीं। टाइम टेबल से कौन कौन है? ब्रेक है, आधे घंटे का ब्रेक है। ये 11 बजे से दूसरी क्लास होगी। ओके सर, थैंक यू। में बैठे हैं, लेटरिन में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, पहाड़ बैठ गए, पहाड़ पे बैठे हैं। लिंक पे होनी है, ये उसके लिए लिंक भेजा जाएगा। देखो ना, आप कहाँ बैठे, आप पीछे बैकग्राउंड नहीं ना। चाहे आप जैसे कार में भी हो तो अभी आपकी सही कह रहे हैं क्या? गूगल मीट कर दो, ज्वाइन करने का ऑप्शन है, उसी से सब लोग चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह जी, क्या हाल है? बस ठीक है सर, आप सुनाइए। और बताओ क्या चल रहा है? अब तो बढ़िया रहा आपका प्रेजेंटेशन। और सुनाइए सर, कैसे हाल चाल है? बस बढ़िया है। अब नमस्कार। सेटिंग नहीं बन पाती है, नहीं बन पाई थी आई कॉन्टेक्ट के लिए। ऑनलाइन में सिस्टम ऐसे ही चलता है, थोड़ा बहुत होता है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारे कॉलेज के हैं मित्र। प्रेजेंटेशन। अरे ठीक है। हेलो। हाँ भैया, एम है। इतने लोग हैं ग्रुप। कॉलेज नहीं चलोगे?
कॉलेज देखो देखो छुट्टी नहीं मिली है कॉलेज की। कॉलेज में पहुंच गए? कॉलेज में और कॉलेज से चल रहा है प्रोग्राम ऑनलाइन तो। सही है। आज हम लोग मूवी देख रहे हैं। हाँ यही है, यही दिखा रहा है ऑनलाइन हम लोग चलते हैं फिर। बताते हैं वो हम लोग ऑनलाइन ओके सर। ये कल के बाद फिर आज सीखने के बाद तो फिर लक्ष्मी जी चलो थोड़ी देर में पहुंचते हैं। आ जाओ, क्या करना है इसको। ओके ओके ओके। ओके।